So what may be transferred? That's what section 6 is saying. Property of any kind may be transferred. कहता है जी कुछ भी हो कर देना transfer, except as otherwise provided by this act. तो ये otherwise provided by this act 10 तरीके की प्रॉपर्टी दे रहा है और ये रे 1 2 3 4 5. This is of course by an amendment 6 7 8 9 and 10. Right, so these 10 kind of properties, they are explicitly they are saying this cannot be transferred, बाकी सब कुछ ट्रांसफर कर लेना. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखा, देख गया, ओके. Or by any other law for the time being in force. This primarily is primarily not in its entirety, but primarily referring to personal laws. For example, waqf, or for example, properties that you've dedicated to a temple or whatever. Then that is, that prohibits that those cannot be transferred. In addition to these 10 kinds of property, right? Now, what are those kinds? And of course, we need to comment on that. And the most important one is clause A. कहता है the chance देखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि कल को मुझे प्रॉपर्टी मिलेगी. Chance of an heir apparent. एक्चुअली इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है heir, AYE कह सकते हैं, एयर. तो H नहीं होता है, H साइलेंट होता है. हेयर नहीं बोलना है इसको कभी भी. हेयर या तो हेयर बोल सकते हैं, लेमैन लैंग्वेज में हेयर भी जा सकती है, बट लास्ट में आर यूजली अवॉइड करते हैं, बट कई लोग H भी साइलेंट छोड़ देते हैं. गूगल से देख लेना इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. बेसिकली अगला आदमी, और यहाँ पे एन लगता है इसके साथ सदा. दिस इज इंग्लिश के प्रीलिम्स के सेक्शन में, दिस इज ऑफन आस्क्ड because your Bare Act is making it clear that you have to use an an. अच्छा, और अगर an लग रहा है तो that means H तो नहीं है, hair तो नहीं बोल सकते, राइट? तो air, क्योंकि अगर अ होगा आवाज से जरा पहचानिए तो an आ जाएगा, ठीक है. Succeeding to an estate, the chance of a relation obtaining a legacy on the death of a kinsman. So this is 1, this is 2, the chance of a relation. Again तुक्ताबाजी है. Or any other mere possibility of a like nature cannot be transferred. तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं. देन वी कम टू बी, सी एंड डी. अच्छा, नोट करिएगा थोड़ा सा, सेक्शन को खोलने से पहले नोट करिएगा. देखिए, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट, कैन नॉट. प्री के क्वेश्चन दिखे कि नहीं दिखे? तो मुझे 10 चीजें हैं, मुझे रोट लर्न चाहिए, क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसफर्ड. 4 ऑप्शंस, 3 ये दे देगा, एक चौथा can be transferred, which will be like a normal option, the immovable property, or any other basically rights in an immovable property, some specific kind of rights. But यहाँ पे जो बात हो रही है cannot be transferred. So therefore section 6 becomes extremely important. खैर मतलब, to tell you honestly, for judiciary exams everything mostly is important, not every section, but these sections which almost अगर आप देखेंगे, there's a pattern to it. There's a pattern. What is the pattern is कि जो शुरुआती जो कोर क्रक्स, जो रूट्स होते हैं एक्ट के, एग्जामिनर उसके पीछे हाथ धो के पड़े रहता है. People almost always think that judicial services examinations, will be very, very advanced. Actually, no, they keep on testing you on the basics again and again and again and over and over and over again. Because if your colleges were doing a damn good job at clearing out the basics, which they do not do, you wouldn't really need me or, well, any other teacher, right? Because if your college were that good, because teachers, they just focused on completing syllabus. Nobody really wants to go into the basics. Very frankly, उन बेचारों की गलती भी नहीं है, उनके पास टाइम भी नहीं है, क्योंकि उनको भी डीन कहता है सेमेस्टर में, भाई सिलेबस निपटाओ, सिलेबस कराओ, आगे डिग्री कराओ, आगे लोग देख लेंगे अपने आप. And well, that's let's forget the philosophy. Okay, so and then section 7 is talking about competency to transfer. अगले लेक्चर में काम करेंगे. Every person competent to contract, सेक्शन 11 ICA, याद है कि नहीं है? ये टिप्स पे होना चाहिए, जो मैं बोलते रहता हूँ ना, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शंस टू रिमेंबर, लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन 11 ICA कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 ICA कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 ICA कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट. रट्टा मार मेरे पुत्र और पुत्रियाँ, क्योंकि ये हमेशा हमेशा याद रहना चाहिए. ओके, सेक्शन 7 भी अगली बार करेंगे, बट दिस इज वेरी सिंपल सेक्शन, एक्सेप्ट फॉर दिस वन वर्ड कंडीशनली, इसके ऊपर हमने टिप्पणी करनी. ओके, सेक्शन 5 की नथिंग इन दिस चैप्टर 2 अगली पिछले वाले लेक्चर में हमने काम कर लिया था. ओके, नाउ so write down the again the concept note for section 6 is,
For a valid transfer, well, the property has to be transferable. What may be transferred, or remember, I remind you, spelling mistake नहीं करनी है. Transferred में double R है, ठीक है जी. Transferee, transferer. मीन्स में दिक्कत होती है. मैं मेरे पास भी जब भी आप आंसर राइटिंग के लिए अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे, प्लीज स्पेल चेक इट बिकॉज आई विल डिडक्ट मार्क्स. प्रॉपर्टी मस्ट बी ट्रांसफरेबल. प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की ही नहीं जा सकती उसको ट्रांसफर करेंगे कैसे आप? बाय नेचर इफ इट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड. So two kinds of properties you can classify. One is transferable, one is non-transferable. And any time that you try to make a transfer of the non-transferable property, of course it is going to be void. Therefore, transferability is a general rule, non-transferability is an exception. 10 such explicit exceptions have been given to you in section 6. Okay. Non-transferable is A to I section 6 and non-transferable की दो कैटेगरी दे रही है आपकी एक्ट. कैसे दे रही है जी? दो कैटेगरी. प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड मे बी ट्रांसफर्ड except as otherwise provided by this act, category number 1. Category number 2, by any other law for the time being in force. Okay, understood. Should I go ahead? मतलब लाइव क्लास तो नहीं है, but non transferable is A to I section 6 and other laws. Okay, done and done. Okay, other laws के अंदर क्या चक्कर है? Other laws, for example, let us take as Hindu law. Co-passionary, or if you are a co-passionary property, or co-passionary rights, they cannot be transferred. You cannot, you just cannot. So they are non-transferable properties. Property dedicated to God, आपने मंदिर में दे दिया दान, non-transferable under Hindu law. So just write down examples. Waqf, once it is gone, once you've dedicated to a religious cause, even under Muslim law, it is gone. Section 60 of the CPC, you can pause the lecture here, just go through what section 60 of the CPC is saying. It prohibits attachment of certain kinds of properties. Section 60 of the CPC, एक बार ही देख लेना. अगर कॉन्सेप्ट नोट लिखना हो सेक्शन 6 का किसी भी स्टेट की जुडिशरी के एग्जाम में, ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दिस यू मेंशन इट, you will get a lot of good marks. 10 kinds are given under section 6. This is a standard pre-Q question. How many kinds of properties cannot be transferred? Section 6 के अंदर, right? 10 kinds. Spec successionist. तो पहला जो clause है of A, it is formally known as spec successionist. Now spec has nothing to do with spectacles or something, but spec has everything to do with the word speculate. कि आप अंदाजा, आप अनुमान लगा रहे हैं कि अच्छा ऐसे होगा वैसे होगा, that is speculate, all right? Expectation of succession, that is what this means. कि आपको लग रहा है कि कल को पिताजी गुजरेंगे तो प्रॉपर्टी मिलेगी, चलो उसी को बेच देते हैं, उसी को ट्रांसफर कर देते हैं. कर पाएंगे? क्या पता पिताजी के गुजरने से पहले हम गुजर जाएं, हो सकता है. क्या पता पिताजी विल कर दें और पड़ोसी के लड़के के नाम कर दें प्रॉपर्टी. क्या पता पड़ोसी का लड़का एक्चुअली हमारे पिताजी का ही लड़का हो, किसी को पता ना हो. पिताजी एडवेंचरस आदमी थे, एनिमल के रणवीर कपूर थे, हो सकता है. गॉड ओनली नोज. जो चीज आपके पास है ही नहीं, हाउ विल यू ट्रांसफर इट? स्पेक सक्सेशन. स्पेकुलेशन है कि सक्सेशन में ये प्रॉपर्टी आएगी, इनहेरिटेंस से आएगी या विल से आएगी. या तो आप टपक गए, मृत्यु का क्या पता. जय महाकाल. मणिकर्णिका या हरिश्चंद्र घाट बनारस पे पड़े हुए हैं, चिता की लपटें जल रही हैं और क्या बोलते हैं, भैरव जी की पूजा वूजा हो रही है जो कि वहां पे रात को होती है. लेकिन सुनेगा ध्यान से, क्या पता वो चिताई हमारी हो सकता है ना. क्योंकि मृत्यु तो इज अ वेरी बहुत बढ़िया चीज है मृत्यु. कोई आज तक बता ही नहीं पाया, कोई इसका इलाज कर ही नहीं पाया मृत्यु का. What may be transferred? The chance of an heir apparent succeeding to an estate. Let us see. So expecting or having a chance of getting a property through a will or inheritance, you cannot transfer this chance क्योंकि ये chance certain ही नहीं है. So the root, the मूल मंत्र of this clause is अनसर्टेन के ऊपर कैसे काम करोगे भाई. अनसर्टेन चीज को कैसे ट्रांसफर करा सकते हो आप. सो पॉसिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रॉपर्टी इन फ्यूचर, यू कैन नॉट ट्रांसफर दैट बिकॉज वेल इट रिमेन्स एज अ मियर पॉसिबिलिटी. हेयर अपैरेंट, अब शब्द का भी मतलब हमें समझना है. हेयर अपैरेंट इज apparently an heir but not a legal heir.
अब वो यार कह रहे फैमिली लॉ में तो लीगल एयर पढ़े थे, अब ये तो कह रहे हैं जी अपेरेंटली एन एयर, चलो मैं आर बोल रहा हूँ, एयर एच नहीं बोल रहा फिर भी, अपेरेंटली एन एयर बट नॉट लीगल एयर। भाई अपेरेंटली तो कल को नीचे वाला एयर मतलब बाप बेटे में बेटा पहले गुजर गया, कोविड हो गया था जी, अब कौन सा है, तो ही इज अपेरेंटली एयर। जब तक वो फुल फाइनल बात नहीं होती तब तक हम बात नहीं कर सकते। So heir apparent is a person who would be an heir in the future if he survives the propositus. Propositus is the deceased whose property he inherits is known as the propositus. A person who would be an heir in the future if he survives the propositus. पिताजी गुजरेंगे और बेटा अगर जिंदा रहा उस टाइम पे, then you are then you'll become the fully final legal heir. Till then you are what? Heir apparent. You are apparently an heir. देखेंगे कल को मृत्यु किसकी पहले होगी, ठीक है। So the disease whose property inherits. So propositus basically and well let us say he dies interstate, दूसरी कंडीशन, अब पता चले विल बना दी इन्होंने किसी और के नाम की जिसके अंदर प्रॉपर्टी किसी और को दे गए, तब भी तो नहीं है, आप जिंदा भी रह गए लेकिन तब भी नहीं शेयर मिला, हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। So he has to die interstate as well. या फिर विल लिख रहे हो तो विल के अंदर ये बात पक्की होगी आप ही को मिलेगी प्रॉपर्टी, राइट, बट देन फिर डेथ का फैक्टर आ जाता है, दैट हु विल सर्वाइव हु। सो द कोर क्वेश्चन इज हु सर्वाइव्स whom. So therefore you are an heir apparent. Understood? Okay. Chance of a legacy. तो अच्छा, तो लाइक ये सारा तो हमने स्पेक सक्सेशनिस्ट समझ लिया। यू कैन नॉट ट्रांसफर अ स्पेक सक्सेशनिस्ट कि हाँ कल को ना तुमको हमें पता है पिताजी का वो ग्रेटर कैलाश वगैरह में मकान पड़ा है, ले भाई आज खरीद ले, कल को तो मेरे को ही मिलना है। कैसे, किस सर्टेनिटी से बोल रहे हैं कि आप जिंदा रहेंगे पिताजी के गुजरने से, क्या बोलते हैं, पहले ही आप गुजर गए तो, या पिताजी विल के में किसी और का नाम कर गए तो। जो चीज आपकी है ही नहीं उसको आप ट्रांसफर कर कैसे लेंगे? स्पेक सक्सेशनिस्ट, सिंपल फंडा है। So chance of a legacy. Now coming to more words in the section, expectancy of getting certain property under a will. Now again this is an ancillary concept मैं इसके ऊपर पहले ही बोल चुका हूँ। Legatee, well it's simply a chance. What if there are two wills? कि आपके नाम पे विल हो गई, आप अमेरिका चले गए, पिताजी ने पीछे से एक और बनवा दी। अच्छा आप अमेरिका चले गए और वहां से जाके किसी लोकल डीलर को फोन करे, हाँ हाँ मेरी ही प्रॉपर्टी है, मैंने देख लिया विल में सब कुछ लिखा हुआ है, सेल इट ऑफ। You don't own it. You only have a chance to get the property as a legacy, right? So again, two wills. Will you survive? Will you survive पिताजी? क्या पता will से पहले ही आप निकल लें और पिताजी वहीं के वहीं रह जाए। So the central idea behind clause A is any property which is merely a future uncertain possible interest should not be made a transferable property. Understood? Okay. Any other possibility of a like nature, ये भी शब्द दे रखे हैं, so it covers out all contingencies. So for example, a fisherman cannot, let us say that he contracts to enter into transfer fish that he'll catch the next time he throws a net in the sea. Now this, then we enter into the domain of contingent contracts. भाई मछली पकड़ेगा तो आगे बेच पाएगा ना, लेकिन अगर मछली पकड़ने से पहले कह रहा है हाँ ये इतनी मछली तुम्हारी हो गई है, मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, अभी के अभी एग्जीक्यूट करा लो अंडर टीपीए, हो नहीं पाएगा, बिकॉज दैट इज स्पेक सक्सेशनिस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू रिसीव फ्यूचर ऑफरिंग? राइट टू रिसीव ऑफरिंग्स ऑफ अ टेम्पल, you can say it is a beneficial interest. This specifically relates to this beneficial interest, and therefore since it is an interest in a property, it's property. Now if you want to transfer the right to receive future offerings, so let us say if you are a Pandit ji in a major shrine, let us say तीर्थ में या काशी विश्वनाथ मंदिर में या बटुक भैरव मंदिर में या वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी का तो केस भी है, केस लॉ भी है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ता है मेजर तीर्थ स्थलों पे कि वहां, अब देखिए देवता को क्या ही चढ़ावा, अब जैसे विष्णु जी को लोग कहते हैं कि मेरा ये काम करा दो, 11 रुपए या 1100 रुपए या 11,000 रुपए चढ़ाऊंगा या नारियल चढ़ाऊंगा या कुछ भी, उनके पैरों में मतलब महालक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, आप उनको क्या ही दे पाएंगे ना,
क्योंकि आफ्टर ऑल वो आदमी मतलब आदमी नहीं, वो देवता है, तो श्रेणी अलग है उनकी। तो लेकिन जो नीचे जो बैठे हुए इंसान है वो तो उतने ही मतलब दे आर एज ग्रीडी एज पॉसिबल, राइट? So therefore, transferability of the right to receive future offering. Let us say the Pandit ji wants to transfer his own right to receive those offerings that are basically given to the temple and then they flow out to them. अब इसके ऊपर लड़ाई है कि can you transfer this? So Calcutta High Court said, well, this is an uncertain future right. What if tomorrow devotees just do not come into the temple and there is no offering being made? Personally, I agree with this sort of an interpretation, but Allahabad High Court says not so uncertain. It is a very certain thing about offerings in a temple, because what will devotees come in and they have to offer something. So therefore, well, it is quite a certainty. But मैं Calcutta High Court वगैरह के साथ साइड करता हूँ, but Supreme Court sided with ये Allahabad High Court and said that the right to receive future offerings is a heritable right and an interest, so therefore you can transfer it. This was decided in Badrinath versus Punna, PUNNAAIR 1979 SC 1314, and this was a case about offerings being made to Vaishno Devi Ji shrine. तो वैष्णो देवी जी के जो मेन जो पंडित वगैरह वहाँ पे जो होते होंगे, मतलब see it is one of the major pilgrimage centers in India, right? And everyone wants the blessings and favors of the goddess above, and for that everybody tries a quid pro quo कि ये चढ़ाऊंगा तो माता जी खुश होंगी, माता जी खुश होंगी तो माता जी अपना आशीर्वाद बख्शेंगी, और आशीर्वाद बख्शेंगी तो हमारे परिवार में सुख समृद्धि और उन्नति होगी। खैर मैं अपनी फिलोसफिकल ट्रेनिंग में नहीं जाता हूँ, लेट्स स्टिक टू लॉ। ओके, so this was the right to receive, ये आपका future offerings was held to be a certain future right, so therefore it is transferable. This was ये चीज़ याद रखनी है in Badrinath versus Punna, ठीक है जी। Under Muslim law, spec succession is not transferable, it is void. अब पंजाब में तो TPA applicable ही नहीं है, as we have seen. If you will ever be taking the Punjab का judicial services का exam, always remember this is a set standard question, discuss the applicability or basically describe the applicability or describe spec successionist in Punjab. So spec successionist यहाँ पे valid हो जाता है in Punjab, as in so you can transfer it. बाप रे। So this is गोविंद versus चानन सिंह, हमारे दादाजी का नाम, AIR 1933 लाहौर 378। मेरे दादा की इसमें नहीं है, मतलब उनका भी नाम चानन सिंह था। तो पंजाब के आपके पंजाब में TPA नहीं है, तो TPA नहीं है तो सेक्शन 6 नहीं है, सेक्शन 6 नहीं है तो स्पेक सक्सेशनिस्ट क्या ट्रांसफ़र करा सकते हैं पंजाब में? हाँ जी करा सकते हैं। वहाँ पे स्पेकुलेशन को भी आप बेच पाएंगे। However, it is advised, well, Punjab hopefully one day wakes up and applies that spec succession is non-transferable property. Okay, what happens in English law? So English law के अंदर जो equity का जो law है, it has been hard coded in section 43 of the TPA. Open your bare act to TPA as in section 43. I'll just wait. Open your bare act. सेक्शन 43 पॉज भी करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक अभी तक आप पहुंच गए होंगे टू सेक्शन 43। याद रखना है स्पेक सक्सेशन है सेक्शन 6 के अंदर, ए के अंदर, क्लॉज ए के अंदर हमेशा सेक्शन 43 हमेशा अपने आंसर्स में मेंशन करना ही करना है। ट्रांसफर बाय अनऑथराइज्ड पर्सन हु सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड। अब मान लेते हैं केस होता है कि आज की डेट में तो प्रॉपर्टी आपको नहीं आई, वो जैसे वो अमेरिका चले गए आप और आपके विल में लिखा हुआ और आपने प्रॉपर्टी डीलर को बेच दो उसको। जिस टाइम आपने फोन करा उसी टाइम पे एज एन आपने, चलो किसी और के एग्जांपल भी लेते हैं बिकॉज डेथ इज इन्वॉल्व्ड, उस कोहली जी ने वहाँ पे फ़ोन करा और कोहली जी को कहा गया कि ऐसा है, वो कोहली जी को बताया गया आपके पिताजी अभी के भी गुजर गए। कोहली जी कह रहे वाह जी वाह बहुत अच्छी बात हो गई। तो एज एन मतलब कोहली जी बड़े क्रूर आदमी है इस तरह से। लेकिन अगर आप देखें where a person fraudulently or erroneously represents that he is authorized to transfer certain immovable property and professes to transfer such property for consideration, such transfer shall at the option of the transferee operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract of transfer subsists. अब इसके अंदर क्या चक्कर है कि मान लेते हैं वो मतलब उस टाइम पे जब उन्होंने फोन करा कि प्रॉपर्टी बेच दो तब तो उनके पास नहीं थी, बट ही वाज एरनेसली फ्रॉडलेंटली और एरनेसली रिप्रेजेंटिंग कि हाँ मेरे पास है प्रॉपर्टी। अब मान लेते हैं कल को वो वाकई में प्रॉपर्टी उनके पास आ गई, तो देन एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी सामने वाली पार्टी इनसे एनफोर्स करा पाएगी अंडर सेक्शन 43 ऑफ द टीपीए, बिकॉज दिस इज द इंग्लिश लॉ ऑफ इक्विटी कि स्पेक सक्सेशन इज नॉन ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। हाउएवर कल को अगर वो प्रॉपर्टी तुम्हारे पे आ गई
और उस टाइम पे तुमने को अट्रैक्ट किया हो किसी और सामने वाले के पास, इग्नोर माई constant touching of my nose, it's just I don't know what happens in a class. Professors to transfer such property for consideration. Such transfer shall at the option of the transferee operate on any interest which the transferor may acquire in such property at any time during which the contract or transfer subsists. So if that contract is alive, then सामने वाले को राइट पकड़ा देंगे बिकॉज इक्विटी है यहाँ पर, और इसीलिए आप सेक्शन 43 हमेशा अपने आंसर में मेंशन करके आएंगे. इलस्ट्रेशन करते हैं. A Hindu who has separated from his father B sells to C three fields X Y Z representing that A is authorized to transfer the same. गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं. Of these fields, Z does not belong to A, it having been retained by B on the partition, but on B's dying, A as heir obtains Z. C, not having rescinded the contract of sale, may require A to deliver Z to him. Pre का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन मार्क कर लीजिए. होपफुली इट इज क्लियर. कल को अगर वो प्रॉपर्टी आ गई और आप पहले से वो सामने वाले को बोल चुके हो एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज सब्सिस्टिंग, सामने वाले के ऑप्शन पे एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड. अनदर प्री का क्वेश्चन इज एट हुज ऑप्शन, एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी. ओके, ठीक है जी. क्लासिक केस लॉ भारत निधि लिमिटेड वर्सेस तखतमल, AIR 1969 SC 313. ओके, तो रेशियो के अंदर इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि स्पेक सक्सेशनेस इज नॉन ट्रांसफर प्रॉपर्टी, बट इफ स्पेक सक्सेशनेस इज कपल्ड विद सम कंसिडरेशन देन इट बिकम्स ट्रांसफरेबल. की कंसिडरेशन, अब भैया पैसा तो आ गया ना अब आपके पास, एज इन जमीन तो आ गई है अब आपके पास, तो अब जाके आपको मतलब सामने वाले को अन्याय ना हो, इसीलिए हमने ये सेक्शन ही डाल दिया है. जब ये बनाई गई होगी एक्ट, उन्होंने कहा भाई इंग्लिश लॉ में क्या हो रहा है, उन्होंने इसको दे हैव बेसिकली पुट इट इन द एक्ट. ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. नो डाउट स्पेक सक्सेशनेस, इसके ऊपर वो भी आ सकता है, 5 मार्कर भी आ सकता है, 10 मार्कर भी आ सकता है. आई थिंक नाउ यू आर रेडी टैकल दैट. A mere right of re-entry for breach of a condition subsequent cannot be transferred to anyone except the owner of the property affected thereby. A mere right of re-entry. अब ये right of re-entry क्या है? Basically it's the right to resume possession. अब मान लेते हैं आपने एक जगह किराए पे दी, आपने किसी को किराए पे दे दिया काम, एक प्रॉपर्टी 3 साल के लिए आपने उसको किराए पे दी. जब वो 3 साल पूरे होंगे, your right to your own property which is then restored is, well, it's right to re-entry. Your right to resume possession is right of re-entry. Okay, so a person को ने आपने possession दिया in a time bound manner and you are entitled to get it back. That right of entering into possession is right of re-entry. ठीक है जी, वो थोड़ा सा वहाँ पे वो shuffle out as in डबल आना शुरू हो जाता है when the iPad starts to give up, क्योंकि वो कहता है अरे मैंने जुडिशरी के लिए नहीं साइन अप करा था भाई. ओके, इलस्ट्रेशन एक और ले लेते हैं. ए ने लीज पे दी प्रॉपर्टी बी को 3 इयर्स, कंडीशन में बोल दिया कि यू विल नॉट डिग अ वेल ऑन इट एंड बी डिग्स अ वेल ऑन इट. ए ने कहा सी को कि तू ले ले भाई पोजेशन, कब्जा ले ले तू. राइट ऑफ री एंट्री इज नॉन ट्रांसफरेबल. देखो लेमैन लैंग्वेज में ऑफ कोर्स यू नो ए कैन ऑफ कोर्स से सी कि जा भाई कब्जा दिला दे, अपने पैसे ले ले, जो कि होता भी है. ए कैन नॉट गो टू अ रजिस्ट्रार, गेट अ ट्रांसफर का डॉक्यूमेंट, अ कन्वेंस डीड मेड एंड सेइंग दैट आई एम ट्रांसफरिंग माय राइट ऑफ री एंट्री टू सी, आज से जो करेगा वो सी करेगा. ये नहीं हो पाएगा. अंडरस्टूड द डिफरेंस ऑफ व्हाट टीपीए इज प्रोहिबिटिंग, दैट यू कैन नॉट कन्वे द राइट ऑफ री एंट्री टू अ थर्ड पर्सन, एज सिंपल एज दैट. ओके, इलस्ट्रेशन 2 क्या है कि ए ने बी को जी 5 साल की लीज दे दी बट नो सब लेटिंग अलाउड. बट ऑफ कोर्स बी तो बेकार आदमी, तो बी डज इट, बी डज सब लेटिंग. ए सेल्स दी प्रॉपर्टी टू सी. अब यहां अंतर आ जाएगा, देखो वहां पे ऊपर था ए आस्क्स सी टू टेक पोजेशन, ए ने प्रॉपर्टी बेची नहीं थी. A sells to C, that is right of re-entry plus ownership rights भी बेच दिए, ये ठीक है. तो ownership rights जब ट्रांसफर हो जाएंगे C को, तो C can end B's tenancies, क्योंकि अब सिर्फ right of re-entry नहीं बेचा गया. right of re-entry is just a part, it is an ancillary right of the entire bundle of rights known as ownership. अब ownership बेच दी, of course C मतलब कोई गुंडा टाइप आदमी होगा, कब्जा मैं ले लूंगा, आप बस मेरे को बेच दो, बाकी मैं देख लूंगा. रियल लाइफ में ये बहुत ज्यादा होता है. तो यहाँ पर C भैया हटा पाएंगे B को. लेकिन A cannot formally sell only his right of re-entry because, well, it is barred by the section.
Okay, so spec succession is barred unless and unless coupled with some consideration, that is you are getting the property in the future and the contract is subsisting. Section 43 हमेशा याद रखना है. Spec succession is means expectation of getting a property or a chance of getting a property in the future. Okay. See, an easement cannot be transferred apart from the dominant heritage. तो ये दोनों शब्द हमें समझने पड़ेंगे. easement, like for example, मैं यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, यहाँ की वाटर टैंक ऊपर छत पे है, छत पे मेरे पास easement rights हैं. मेरे पास easement rights हैं that I can access my water tanks, get them cleaned, whatever, get them repaired, you know, whatever it is required. So those are what we call as easement rights. ये easement right जो है वो इस चक्कर में है कि ये property मेरे पास है. So this property will be known as dominant heritage. However, I cannot merely sell off or transfer only the easement right to a third party. That easement right exists because of this dominant heritage. Understood? Okay. So easement is a right which exists for beneficial enjoyment of a land and is exercised upon the land of another person. भाई वो जो बाकी जो 2 फ्लोर हैं वो तो किसी और के हैं, राइट? या छत पे ऐसे नहीं, आपके जो बाकी जो 2 फ्लोर हैं जो मेरी बिल्डिंग में है वो किसी और के पास है और छत भी उन्हीं के पास है. So easement is a right which exists for beneficial enjoyment of land and is exercised upon the land of another person. तो मुझे वो छत के एंट्री उनके थ्रू जाना पड़ता है, ठीक है जी, जिसके लिए वो दुखी भी बहुत करते हैं, लेकिन well you know just human nature. अब ये जो राइट जो है मेरा टू एक्सेस माय वाटर टैंक्स, इट एग्जिस्ट ओनली ड्यू टू the property, my property, this one. So that property is known as dominant heritage and it exists. So and जो उनका जो लैंड, लाइक उनका जो शेयर है, जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, दैट इज नोन एज सर्विएंट हेरिटेज, SERVIENT हेरिटेज. सो लैंड ऑन विच द राइट एग्जिस्ट इज सर्विएंट हेरिटेज. अंडरस्टूड? ओके. सो इलस्ट्रेशन देख लेते हैं. इफ A's house, well you know, let us say that A's house is there, but वो ऐसी जगह पे है that to access the main road or to even to get to the house, A has to go through B's land, alright? So A's right of way is an easementary right. Right is basically not of A, but right is attached to the house. The right cannot be severed or detached from the dominant heritage. So A's house will be known as dominant heritage, B's house, B's land will be known as servient heritage. और मैं ये जो right है, जो easementary जो right है, I cannot detach it from the dominant heritage. All right. So well, I cannot transfer it separately. Therefore, it is barred by Section 6 of TPA. Okay. Now, Clause D is talking about restricted interest. Restricted interest का क्या चक्कर? Restricted interest is, for example, I hire a teacher at this institute, which we are soon going to be doing, to cover out specific portions of the judicial services exam ka syllabus. And I tell them the qualification that is required is either a LLB coupled with the LLM or either a LLB and you have cleared pre or mains of any of the major states. And then let us say that teacher transfers their right, लॉ का टीचर ट्रांसफर देयर राइट कि सर ये इंग्लिश बहुत अच्छी पढ़ा लेता है, कल से ये पढ़ाएगा, मैंने ये ट्रांसफर कर दिया इसको. दैट इज नॉट अलाउड. सो इन रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट में बेनिफिशियल इंटरेस्ट वेल डिपेंड्स ऑन द ओन एंजॉयमेंट, राइट? सो बेनिफिशियल इंटरेस्ट जो आपका इस स्पेसिफिक केस में आ रहा है, दैट इज बेसिकली अराइजिंग बिकॉज ऑफ अ क्वालिफिकेशन. लेट्स से दैट देयर इज टीचर इन इंस्टीट्यूट, यू कांट ट्रांसफर द बेनिफिशियल इंटरेस्ट ऑफ टीचिंग इन द इंस्टीट्यूट. तो वो आपका राइट तो जरूर है, आप उसको बेच नहीं पाएंगे. Remember, Section 6 was starting with property of any kind except, well, of course, this is आपके. Always remember, property. जब भी हम property बोल रहे हैं तो property doesn't mean property. It's a plot only, right? Property means rights and property means interests as well, actionable claims, etc. Right? So you can't transfer beneficial interest of teaching. For example, office of pujari in temple, there needs to be a person qualified to do puja. वो मतलब पुजारी कह रहा है जी मैं काम कर यार, यहाँ मैं बड़े साल देवी देवता की मैंने पूजा कर ली, ये 10 करोड़ में तुम्हारे को देता हूँ हक. ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे बिकॉज द सेक्शन प्रोहिबिट्स अंडर क्लॉज डी. और अ मुतावली ऑफ वक्फ हु इज नोन एज द मैनेजर ऑफ द वक्फ, अ मुतावली. सो वेल यू नो यू कांट ट्रांसफर दिस रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट. ठीक है जी. या एंड यहाँ पे ये देखो डबल और ज़्यादा होने लग गया था, तो आईपैड जी ने मेरे को कहा माफ़ कर दे भाई.
तो कोई बात नहीं, आज हम फंस गए इस सिचुएशन में, तो लेके बट मैंने कहा शूट करके आज तो मैं अपलोड करूँगा ये। और अब क्लॉज डी से लेके अगले वाले क्लॉजेस +7 अगले लेक्चर में कर लेते हैं, वंस माई iPad इज बैक एंड अप एंड रनिंग। ठीक है जी, आई विल सी यू इन फर्दर लेक्चर्स एंड टेक केयर। वो वाले मतलब जैसे ही आपके पास अपलोड होते हैं, जो लोग इस टाइम पे बैच वगैरह में हैं, अगर आप फ्यूचर में हैं तो ऑफ कोर्स आपको वो सारे के सारे लेक्चर दिख ही जाएंगे। चलिए इसके अंदर फिर आगे बातचीत करते हैं। टेक केयर, नमस्ते। सो नाउ लेट्स कंप्लीट आउट द पेंडिंग पोर्शन ऑफ सेक्शन 6. we'll start from clause dd. Now if there is, well, another alphabet that joins in clauses, that means it is come in via the amendment, and this amendment is 1929 amendment. So right to future maintenance will maintenance standard पुरानी CRPC में से section 125 homework, new वाली CRPC में कहाँ पे दे रखी है maintenance. Now maintenance is a personal right, therefore it is non-transferable. It is a right to future maintenance. So for example, so now what are we talking about? We are talking about that can you transfer this right to a third person. So for example, let us say that via a court order, you've secured maintenance, let us say even in a divorce matter or whatever it may be. Can you transfer that right? So can you transfer that right, and that right, can we consider it as property under TPA? So can we then transfer it? So section 6 is telling you no, you cannot. Since it has come in via the amendment, and specifically anything done in 1929 basically was to resolve a judicial conflict. वहाँ पे दो हाई कोर्ट के अलग अलग जजमेंट आ गई होंगी, and at that point of time, since the law was just being coded, we were coding the English law basically, and the legislature was hyperactive in trying to code all the latest developments and every judicial precedent or any controversy that used to arise. So pre 1929, the Calcutta High Court said, well, it is a non-transferable property. How can you transfer the right to a future maintenance, because it is uncertain? So it is something like spec successionist. You're speculating कि हाँ इतनी maintenance तो मिल जाएगी, तो मेरी को मत देना, तुम किसी और तीसरे आदमी को दे देना. How do we get a conveyance agreement, conveyance deed done on this and register it under the Registration Act and complied with TPA? So this is non-transferable. But however, the Madras High Court said, well, it is transferable if the maintenance is under the decree of court, then it becomes a secured right. It is quite certain, so it is transferable. Basically, maintenance can via basically come in via two modes. One is the court or a contract, right? तो या तो कोर्ट से आएगी या कॉन्ट्रैक्ट, आपका कोई पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नाउ स्पेसिफिकली फॉर द कोर्ट मैंडेटेड मेंटेनेंस, मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब ये जजमेंट इनके दोनों के नाम करने की जरूरत नहीं है. सो क्लॉज डी was added in 1929 and the judicial conflict was resolved because one high court was saying one thing, one high court was saying another, that even if under the decree of court, this is a non-transferable property. So section 6 prohibits this. ठीक है जी. स्टैंडर्ड प्री का क्वेश्चन, एज आई हैव मेंशन्ड टू यू इन द प्रीवियस लेक्चर, इज आपका all of these properties you will need to remember जो cannot be transferred हो सकते हैं, right? Okay. So now we are at E. DD तक हमने सारा काम कर लिया है, and D तक हमने पिछले लेक्चर में काम करा था. E. A mere right to sue cannot be transferred. Now focus on this word mere. A mere right to sue. Okay. इसका मतलब अगर राइट टू सू के साथ कुछ और चीज, if right to sue comes part as a you can say a package deal, then can we transfer it? क्योंकि यहाँ पे a mere right to sue cannot be transferred, mere word use करा हुआ है, so we'll just have to be a little careful with this. Okay. So illustration देते हैं. Now इसके ऊपर ये वाला सीन है E, ये बड़ी शानदार सिचुएशन है. This clause basically prevents gambling in litigation. How does it do that? I'll tell you कि होगी नहीं तो लोग कोर्ट्स को भी सट्टा बाजार बना लेते अगर ये ना हो तो. I'll tell you. So for example, let us say पहले एक एग्जांपल ये वाला समझ लेते हैं. ये आपका चलिए यही वाली इलस्ट्रेशन बनता है. इलस्ट्रेशन इज A versus B and A files some or publishes some defamatory statements relating to B, so it's libel, and B gets the right to claim. B gets the right to claim from compensation. B can file a suit and then claim damages, etc. B doesn't file the suit. He does not. He transfers this right to sue. Remember, we're talking about the mere right to sue. So he transfers it over to C. He transfers it over to C. Okay.
You tell me in this. He transfers it over to C. Can he do so under TPA? Should it be allowed? And how can we connect it to gambling? We'll just come back to this illustration in about 2 minutes from now. How do we connect it back to gambling? Or do you think that this is, this is very fair कि चलो right to sue मैं तुम्हें बेच रहा हूँ, तुमने जो देखना हो तुम इस सामने वाले से कुछ भी निकलवा लेना. सोच के देखिएगा. What will it do to the entire, litigation or the legal system? If you only mere right to sue कर रहे हैं पूरा का पूरा, मतलब पूरा, you're not transferring any interest in a property, mere right to sue transfer किया जा रहा है. Okay. Claim of mean profits is again uncertain, so this is non-transferable. Now, object of this specific clause is to prevent gambling out of litigation. This gambling out of litigation is formally in English law is also banned. It is called as champerty. 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 Now, champerty in English law, of course, it is non-transferable and it's banned as well. So, यहाँ पर champerty is the legal term, and ICA section 23 के तहत वैसे भी as per the public policy, the ground of public policy, section 23 के तहत void है. Now, let's come back to the example. Let us say illustration A versus B, and A is entitled to get a certain amount from B. So A claims 50,000 and A sells the right to sue to C for ₹30,000. मतलब कह रहा है कि तू निकलवा लियो भाई इससे, मेरे को 30,000 दे दे, कम इनटू कोर्ट, इससे जितने मर्जी निकलवा तू. टेक्निकली स्पीकिंग सी तो बिजनेस कर रहा है ना लिटिगेशन पे. अगर सी की इन्वेस्टमेंट 30,000 रुपए की है, मान लेते हैं सी के दिमाग में आ रहा है अरे इसको तो 80,000 निकलवा लूंगा इससे, 50,000 का केस ही था, लेकिन ऑफ कोर्स ये केस तो ए ने क्लेम करा है. कोर्ट may reduce the claim to 20,000, कोर्ट increases to 60,000, whatever the figures are. लोअर साइड पे बिल्कुल ही लो ले जाइए, हायर साइड पे बिल्कुल हायर, और डिसमिस. Since this is uncertain, like the logic between spec succession is what? It is uncertain. I can't, we can't say anything. It's uncertain, and C is gambling on litigation की. C basically will want कि 30,000 लगाएं तो 60 तो आ ही जाए. अगर ये ना हो तो people will just be selling their right to sue कि मेरे हटा तू आ जा. Now imagine the hellhole it can create, right? The word mere, if the right to sue is not the only right, for example, let us say it involves an interest in the property, then only is it assignable. We'll just do an illustration for that as well. If it is merely a right to sue in court, then it is not transferable. But if you are transferring an interest in the property, then of course उस property के ऊपर झगड़ने भी तो आप ही आएंगे ना, तो right to sue तो आप ही के पास हो जाएगा. Then it can pass on over. थोड़ी सी distinction है यहाँ पे, समझते हैं. So the case law name is Jafar Meher Ali versus Budge Jute Mills. तो ये गनी बैग्स के बोरों के ऊपर बात हो रही थी. तो बोरियों के ऊपर A agrees to sell bags to B. Alright, so A is a factory manufacturer of boris selling bags to B. A basically and B agree about a future delivery date कि इस टाइम तक मैं तुम्हारे को बोरियां सप्लाई कर दूंगा. B assigns to C before the delivery date. अभी delivery date आई नहीं है, B ने वो कह रहा है ये क्या बोलते हैं, आज से बोरियां तुम्हारी हुई, नहीं आई तो A को पकड़ लेना कोर्ट में. लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि उसने बोरियों समेत वो राइट टू सू बेचा है. इट इज नॉट मेयरली द राइट टू सू, मतलब इन द सेंस कि बी कह रहा है सी, सुना सी, हेलो, ए से मैंने कुछ बोरियां खरीदी, देख बोरियां तो मेरी ही रहेंगी, लेकिन अगर ये नहीं आए ना, तू तो बहुत बढ़िया वकील है, या तूने तो लॉ करी हुई है, या तू तो और वकीलों को जानता, इसकी ऐसी तैसी करती हो कोर्ट, राइट टू सू ट्रांसफर करा ले. ये अलाउड नहीं है. बोरियां बेच दी आपने सामने वाले को, मतलब बोरियां या कोई भी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी बेच दिया सामने वाले को, उसके बाद दैट पर्सन कैन हैज द राइट टू सू. So B assigns to C before the delivery date. A fails to deliver. C had beneficial interest in the property. Now because C is the malik of those boris, the gunny bags, C then gets entitled to sue, because now he doesn't have a mere right to sue. He has a lot more. He has a beneficial interest in the property. Understood what the difference is? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर हो रही है. अ मियर राइट टू सू नहीं जा सकता, सिर्फ मियर मतलब इन द सेंस अकेले अपने आप में नहीं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट डाल दो, राइट टू सू ओवर दैट प्रॉपर्टी वो भी आ जाएगा आपके पास. ठीक है जी, ओके.
Transfer of a decree is neither an actionable claim nor a mere right to sue. Assignment of decree for a valid transfer, well, is quite a transferable property. It can be basically done. F and G doesn't need my comment. F says public office cannot be transferred nor the salary of a public officer whether before or after it has become payable. अब आप कह दें कि अच्छा नौकरी तो सरकारी मेरे को मिल गई है लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मेरा छोटा भाई आएगा कल से. You cannot do this. A public office cannot be transferred. और nor can the salary of a public officer. मतलब सैलरी जो आपकी आ रही है उसमें से आपने एक हिस्सा किसी को बेच दिया. That is what the act is saying. That we cannot allow that. नहीं तो public office के अंदर तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी. Stipends allowed to military, naval, air force, civil pensioners or government political pensions cannot be transferred. I believe this is very very clear. इसको pre के purposes से याद रखना है. Question, standard question which of the following cannot be transferred. These are the ones that cannot be transferred as we have discussed in the previous lecture. H, which connects to section 7, nothing in this, no transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of the interest affected thereby. Pointer number 1, we'll discuss all of these. 2, for an unlawful object or consideration within the meaning of section 23 of the ICA 1872. Remember section 23 तो एक तो सेक्शन 11 जो हमने पिछले लेक्चर में करा था अभी दोबारा प्रकट होगा. सेक्शन 11 सेक्शन 23 हमेशा याद होना चाहिए. सेक्शन 23 ICA खोलिए और उसका जो टाइटल है वो अपनी कहीं पे सेक्शंस रिमेंबर की लिस्ट में डाल दीजिए. To a person legally disqualified to be a transferee, nothing in this section shall be deemed to authorize a tenant having an untransferable right of occupancy. A tenant having an untransferable right of occupancy, तो यहाँ पर to assign his interest as such tenant, farmer or lessee. Alright, so this is, the first is talking about tenant, the second is talking about farmer, the third is lessee under the management of a court of wards. ज़्यादा इसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, but यहाँ पे tenant having an untransferable right of occupancy, you cannot transfer. So you cannot perhaps you cannot transfer your leasing rights ahead if it is explicitly mentioned in the lease. It is also given in section 108 of the TPA. When we get to lease, we'll just discuss all of that. So nature of interest, so I'm talking about the first point. Now nature of interest, पहली property देखते हैं. Property के साथ एक legal term आप लिखिए, res communes. Res communes means property of the whole community. अब क्या नहीं ट्रांसफर कर सकते आप, ऐसी क्या चीज होगी जो कि मतलब जो कि आप बेच नहीं सकते हो, तो ईश्वर की प्रकृति की दी हुई चीज है. वैसे तो टेक्निकली स्पीकिंग जमीन भी दी हुई है, जमीन भी प्रकृति की दी हुई है, लेकिन इंसान इतना पागल का बच्चा है कि वो जमीन के ऊपर भी ऐसा लड़ता है कि ऐसे उसने उपजाई हो, लेकिन अब मतलब वही है, माया की दुनिया में ये सब तो चलता है. Property by very nature can neither be owned or transferred. That such property by very nature can be neither be owned or transferred. For example, the air, light, space, sea. How do you sell this? Sea के ऊपर तो चलो हमने लॉ बना रखा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, आपके टेरिटोरियल सी एटसेट्रा एटसेट्रा. 12 नॉटिकल माइल्स, 24 नॉटिकल माइल्स, स्टैटिक जी के से ऑफ कोर्स याद हो. इलस्ट्रेशन लेते हैं. A for example has 100 square meter का land. He cannot merely sell only the light or the air above his land. How do you sell कि भाई साहब ऐसे ये जो 100 गज की जो 100 स्क्वायर मीटर की जो है 100 स्क्वायर यार्ड समझ लेते हैं, 100 स्क्वायर यार्ड की जमीन है, वो जमीन मेरी रहेगी, लेकिन उस 100 स्क्वायर यार्ड के ऊपर जो इतनी शानदार हवा है, वाह जी वाह, उसकी AQI जो बिल्कुल ही 90, वो मैं बेच रहा हूँ. This section is prohibiting that property by its very nature. So that is res communes. Communes is property of the whole community. How will you? या तो भाई जमीन बेच, तो जमीन में ही रोक रही है. Of course जमीन कैसे रोक देगी एक्ट? केवल अगर किसी ने ऐसी बदमाशी करने की सोची कि एक काम करो, जमीन तो मेरी ही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर चार फ्लोर तो मेरे बने हुए हैं, तो छत के ऊपर वाली जो लाइट और हवा और जो पानी वहां पे कभी बारिश जो बरसे जो उसमें पानी, वो बेचने की कोशिश. सो दैट इज व्हाट द एक्ट इज स्पेसिफिकली प्रोहिबिटिंग. क्योंकि अगर ये यहाँ ना लिखा हो तो इंसान इतना लालची है कि वो कुछ भी बेचने की कोशिश करता है. ठीक है जी. होपफुली यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आपका नेचर ऑफ इंटरेस्ट. सो लेट अस रीड इट अगेन. इट सेज no transfer can be made insofar as it is opposed to the nature of the interest affected thereby. So this is what it is mean, that the property का nature ही ऐसा है, it will not allow you, we cannot allow you to make this transfer. If it is unlawful as per section 23 of the ICA, well of course then you can't. For example, lease of a house for prostitution or running a brothel or a gambling house, well of course not. Legally disqualified to be a transferee. So now this connects to, यहाँ पे अगर पिछले वाले सेक्शन में अगर हम जाते हैं यहाँ के शब्दों में,
to a person legally disqualified to be transferee. So this relates to section 136 of the TPA. You can open section 136 of your act and I'll wait. So no judge, legal practitioner or officer connected with any court of justice shall buy or traffic in or stipulate for or agree to receive any share of or interest in any actionable claim. प्री का क्वेश्चन दिखा कि नहीं दिखा? This is extremely important for the point of view of pre. Standard question. Of course, DJS doesn't ask much from TPA in pre. However, since you're preparing TPA, तो फिर किसी भी state की you should be able to counter it. ये ऐसा क्यों रोक दिया होगा इन्होंने? क्योंकि भाई पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी इतनी है कोर्ट्स के अंदर कि एक काम करो, मैटर्स के ऊपर धंधा करना शुरू कर दो. एक्शनेबल क्लेम पे अगर ट्रेडिंग हो जाए, जज साहब भी कह रहे हैं अच्छा 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी आई है, कुछ ना कुछ तो इसके अंदर हमें भी मिल जाए. वकील साहब भी सोचते हैं ऐसे ही. So you cannot transfer that. Basically that interest you cannot transfer. So it's a non-transferable property as per section 6. ठीक है जी. So section 136 में ये जो no judge, legal practitioner or officer connected with any court. Actionable claim में आप डीलिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक है जी. Okay. Now we go to section 7. It says persons competent to transfer. Section 6 is pretty much over. जो most important था वो पिछले लेक्चर में था, spec successionist वाले लेक्चर के अंदर काम आपका हो गया. Persons competent to transfer is this is basically relates to section 11 ICA, section 1123. Both should be on your tips at any given point of time. Section 2 also from the ICA should be with each and every clause should be on your tips at any given point of time. Every person competent to contract, of course, and entitled to transferable property. Every person competent to contract is given in 11 ICA and मतलब compulsory condition है entitled to transfer. So entitle means you have to have the title first. You either have the title via a sale deed or something, basically a deed which gives you the title, or you have a GPA or a SPA, special power of attorney, general power of attorney relating to that specific property as such or person. In GPA, that is the person. SPA means specific property. To transferable property, where is transferable property given? Section 6, of course. Or authorized to dispose of transferable property not his own. This is talking about powers of attorney. Is competent to transfer such property either wholly or in part, or either absolutely or conditionally. Conditionally, you will not sublet it, you will not dig a well, you can't do these activities, you're putting in certain conditions. In the circumstances, to the extent and in the manner allowed and prescribed by any law for the time being in force. Okay. Section 11, ICA देखते हैं. Every person is competent to contract. So now who is competent? क्योंकि आपके सेक्शन ने बोला था every person competent to contract, तो इसी को पकड़ लेते हैं. Every person is competent to contract who is of the age of majority according to the law to which he is subject. एज ऑफ मेजॉरिटी पे मैं अभी आपको 2 पॉइंटर्स लिखवा रहा हूँ, दोनों एक्ट्स के नाम. वो आपने हर आंसर में जहाँ पे भी एज ऑफ मेजॉरिटी जहाँ पे भी बात हो रही होगी डालनी ही डालनी. And who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Standard stuff from 11 ICA, right? Is of sound mind, not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Let us see. ये तो बाकी सारा ICA का काम है, ICA का काम ICA में करेंगे. यहाँ पे क्या करना है? Essential conditions. सबसे पहली बात है, as per section 7. So now we break out the section as usual. Property must be transferable. That is, it should comply with section 6. It should not be explicitly barred by section 6. Transferor must be competent. That's section 7 read with section 11 of the ICA, section 7 of TP, of course. Transferee, जैसा कि मैंने आपको पहले लिखवा चुका हूँ, need not be competent. Specifically, we can say transferee needs to be competent, but the capacity is not quite essential. We'll just get to that. Person must have the right of transfer. Entitled शब्द का मतलब is that transferee capacity is not the sine qua non. So can you transfer a property to a minor? Yes. Can a minor transfer a property? No. Remember, अगर दोबारा मेरी बात सुनना, नहीं तो वो बाद में लोग पैराफ्रेज करके मेरे शब्द जो नहीं होते वो भी बोलते हैं कि इन्होंने ऐसा बोला था. नहीं. Transfer property by minor is void. Can a minor be a transferee जिसको प्रॉपर्टी मिल रही? Yes. So age of majority or the person having sound mind, they are not sine qua non. अगर ये दोनों condition नहीं भी meet हो रही है, you can still be a transferee but not the transferor. Okay. And all the necessary formalities, you have to comply अब जिस type का transfer है, so you have to go from chapter 3 to chapter 8 of TP and then basically comply with those provisions. Okay.
एज ऑफ मेजोरिटी हमेशा जहां पे भी जिस भी आंसर में एज ऑफ मेजोरिटी के बारे में बात आएगी ये स्टैंडर्ड चीज आएगी. दैट सेक्शन 3 इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 at well 18 years. That's Indian Majority Act, as basically the age of majority as per section 3 of the Indian Majority Act 1875 is 18 years. And if guardian is appointed, if the minor has the guardian, then as per Guardians and Wards Act 1890 the age of majority is 21 years. जब भी मेजोरिटी के बारे में बात आएंगे ये रट लीजिएगा, इसको दोबारा आप कम से कम 5 से 6 बारी अपने आप लिखिएगा इसको. ठीक है जी. सादिक अली खान वर्सेस जय किशोर, AIR 1928, PC 152 is the case law name in which it was declared that transfer property by minor is void and such transfer is not validated when the minor turns 18 कि चलो जी अब तो ये this is not a defect that can be cured very easily. तो वो एक बारी डीड या एक बारी ट्रांसफर नल एंड वॉइड है तो वो है, डजंट मीन कि कल the transferer attains majority because he was a minor at the time of the transfer, doesn't mean that the transfer will be validated. ठीक है जी. Okay. In the case of soundness of mind, well, why do we need soundness of mind everywhere? तो जनरल एक्सेप्शंस पुरानी आईपीसी में चैप्टर 4 सेक्शन 76 टू 106 और अब नई वाली तो अभी मेरी जुबान पे नहीं है लेकिन आ जाएगी थोड़े टाइम में. चैप्टर 4 रेड विद 105 ऑफ द एविडेंस एक्ट ऑफ कोर्स ऑलवेज. मैं पुरानी वाली सारी बातें कर रहा हूँ, अब ये नए रट्टे मुझे मारने पड़ेंगे विद द न्यू एक्ट्स. ये साउंडनेस ऑफ माइंड, अब जनरल एक्सेप्शंस में साउंडनेस ऑफ माइंड पे काफी ज्यादा सेक्शंस वहां पे टिके हुए थे. तो साउंडनेस ऑफ माइंड यहाँ पे है क्या? साउंडनेस ऑफ माइंड ट्रांसफरर के लिए चाहिए क्यों? बिकॉज ही हैज टू नो व्हाट ही इज अप टू. भाई प्रॉपर्टी दे रहे हो सामने वाले को आगे. ऑफ कोर्स नॉट टॉकिंग अबाउट अ प्लॉट, चलो इंक्लूड्स अ प्लॉट ओनली, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट्स एंड ट्रस्ट एंड एवरीथिंग एल्स आल्सो. यू नीड टू नो व्हाट यू आर अप टू. अगर दिमाग ही नहीं काम चल रहा तो फिर कैसे आपको अलाउ करेंगे ट्रांसफर करने के लिए? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी रोक देती है, आपकी आईपीसी आपको जाने देती है कि चलो कोई बात नहीं, इसको शुद्ध बुद्ध नहीं थी, इसने जानबूझ के नहीं किया. दैट इज व्हाट the core concept of general exceptions is. So has to know. And in case of a lunatic, when the person is basically, तो हर जगह आपने देखा है बाकी एक्ट्स में लिखा है at the time of the act. So lunatic के साथ एक चीज होता है lucid interval. इसके बेसिकली अगर वो मतलब जैसे पहले पुरानी पिक्चर में था पूर्णिमा के टाइम आदमी पागल हो चुका है, तो बाकी अगर पूर्णिमा से एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद अगर पागल हो चुका है, लेकिन महीने में तो 4 हफ्ते, तो बाकी 2 हफ्ते अगर वो ठीक है, तो जो ठीक होने का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड एज अ लूसिड इंटरवल. तो उसके दौरान वो द ट्रांसफर ही इज ऑफ साउंड माइंड, तो वो वैलिड है. सो इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड. भाई अगर माइनर है या इनसेन है तो ऑफ कोर्स ही इज डिस्क्वालिफाइड एज अ ट्रांसफरर. सो दीज आर व्हाट वी कॉल एज लीगल डिसेबिलिटीज. लेट अस से दैट ही इज इन जेल. Right, the person is in jail, then how can he enter into a contract? मतलब जेल से भी अगर हम ट्रांजैक्शन सारी की सारी आपके अलाउ कर देंगे तो वो जेल का फायदा क्या हुआ? करेक्ट. तो दैट इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. पहले एक जमाने में DLB में क्वेश्चन आता था इसी के ऊपर, जो द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. बड़े मजेदार पेपर होता था वो एक जमाने में. खैर चलो, बीते लम्हों को क्या याद करना. एंड सो दिस वाइंड्स अप 6 का रिमेनिंग पोर्शन एंड 7 वी गो. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि to pick up the pace in the syllabus, so we'll go for 5 sections in each lecture minimum. So section 8 से 13 तक जाते हैं एक lecture में, then 13 से 18, 5 sections. We'll cover out of course the relevant ones for our exams, not each and everything from the bare act. And then we'll basically pick out the pace, and each lecture from here onwards has to be off unless and until some technical disability comes in, has to be of 1 hour each. ठीक है जी. So be mentally prepared going forward. I will try to elongate lectures from the point of view of 1 hour each per lecture, so that in the next 12-13 odd lectures we are through with TPA. All right, see you in further lectures. Take care. Bye.